Now, as the battle for 2019 inches closer, the BSP and the Samajwadi Party sealed the deal for the Lok Sabha polls. BSP Supremo Mayawati and Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav met in the national capital on Friday to finalize the seat-sharing formula and bring together other regional parties for the Mahagathbandhan. According to sources, SP will contest on 35 seats while BSP will fight on 36 seats. Ajit Singh's Rashtriya Lok Dal will contest on 3 seats, while 4 seats have been kept reserved. Reports reveal that both the SP and the BSP have decided not to field any candidates from the Congress bastions of Amethi and Raebareli. देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये बात दोनों दलों की तरफ से साफ हो गई। मुझे नहीं लगता है कि इस गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खाता खोल पाएगी और ये सीधे सीधे 15-85 की लड़ाई होगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछड़े और दलितों का हक जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में दिया, उसको अगर किसी ने छीनने का काम किया है तो वो मोदी सरकार है, योगी सरकार है। Amid a raging BJP-TMC turf war in the state of Bengal, a bizarre statement by Bengal BJP chief Dilip Ghosh has left many puzzled. Heaping praises on West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, Ghosh has wished she becomes the first Bengali Prime Minister of the country. Ghosh has also advised Didi to stay fit and healthy as Bengal's fate is dependent on Mamata's success, hailing her as the potential Prime Minister. Ghosh also expressed disappointment over the CPM not allowing the late Jyoti Basu to contest the prime ministerial polls. He also said since Pranab Mukherjee became president, it's now Mamata's turn to become the first Bengali Prime Minister of the country. বাংলা যদি কোনো প্রধানমন্ত্রী বাঙালি হন তো ওনার সম্ভাবনা আছে, সেজন্য আমরা চাই উনি সুস্থ থাকুন। তারপরে হবে হয়তো ওনার চান্স ফার্স্টে আছে। আমরা জ্যোতিবাবুকে একটু যেন ফসকেছি, ওনার পার্টি হতে দেয়নি। প্রধানমন্ত্রী সেই জন্য লিস্টে ওনার নামই 1 নম্বরে আছে। আর মাননীয় প্রণববাবু রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, তো একজন প্রধানমন্ত্রী বাঙালি হওয়া উচিত। আর প্রেসের মাধ্যমে তো জানাবো, আমি তার চিঠি লিখে জানাতে পারি না। যেন প্রেস মিডিয়াই আমাদের মাধ্যম, তার মাধ্যমে তাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.